Hare Krishna, welcome everyone. So we are discussing sixth chapter in which we'll today understand about the mechanism of the mind and also yoga practices, do's and don'ts, and dualities of this world, how to handle the dualities of this world. So as Prabhupada was explaining in this clip, we saw that every one of us, we are looking for love in this material world. We want to love someone or to get loved by someone and get the peace of mind. But invariably, we are getting frustrated because of not getting real love. So Prabhupada says real love is not possible in this material world. That can be only possible when we start loving Krishna. Then we can get that love feeling for which we are always hankering in this material world. And as soon as we start placing our loving propensity towards Krishna, you will feel satisfaction, you will feel completeness, and you'll start living a happy life. So that is very, very important to love Krishna. And then only we can achieve perfect peace of mind, for which we are whole world is endeavoring to achieve peace of mind. There are big, big seminars for controlling the mind to achieve the peace of mind, but they will discuss everything not about Krishna. But without Krishna, who is called Rishikesha, the master of the senses, mind and senses, without his shelter, we can never achieve the peace of mind. This clue people don't know. Therefore, despite of having big, big seminars, big, big meetings, big, big summits, people are not able to find out what is the best process to have peace of mind and love in life and happiness. So we'll see this in this our discussion. So we'll start with prayers. I request everyone to kindly repeat or follow or join with me. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhesya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So, chapter 6, Dhyana Yoga. Yesterday we had discussed till 5th verse. Udhared Atmanatmanam Natmanam Avsadet Atmanev Atmana Bandhur Atmayo Ripur Atmanam. So here parallelly you can see in the left side also in the screen. In today I have shared two screen. Right side our verses Bhagavad Gita, and left side we have PPT related to the instruction. We have some pictures or some topics understanding by which we can understand better. So here you can see Uddhared Atmanatmanam Na Atmanam Avsadaya Atmayo Atmano Bandhur Atmayo Ripuratma. So the first thing is that if you see in this Sanskrit, there are so many
Atma used in this particular verse. So many times Krishna has used the word Atma, means उद्धारे. उद्धारे उद्धार करना. हिंदी we say उद्धार. आत्मनात्मानम, आत्मा से आत्मा का उद्धार करना. It looks absurd, no? Meaningless statement. आत्मा से आत्मा को कैसे उद्धार करें? You will not be able to understand. कैसे ये होगा? So कैसे समझे इसको? आत्मा से आत्मा को कैसे उद्धार करें भाई? फिर क्या बोल रहे हैं? ना आत्मानम अवसादयत, और आत्मा से आत्मा को अवसाद नहीं करना. अवसाद मतलब डिग्रेड नहीं करना. You have to elevate your mind. You have to elevate your atma with the atma, but you should not degrade your atma with the atma. आत्मा ही आत्मनो बंधुर, आत्मा ही आत्मा का बंधु और फ्रेंड. आत्मा ही रिपुर आत्मना, आत्मा ही आत्मा का शत्रु. रिपु मीन्स enemy. Now this verse appears very redundant, and so many nirarthak. जैसे हिंदी में nirarthak. There is no earth in this verse. Krishna has spoken this verse. So now, if you, therefore, it is very, very important to understand the teachings of the Vedas from the Parampara system, disciplic succession. Then only we'll get to know the real purpose, meaning of the translation, the verse, what Krishna says. Otherwise, now here, you can derive any meaning according to your own understanding. जो आपको समझ में आए, जो आप कन्वे करना चाहते हो, वो आप यहाँ से मीनिंग निकाल के you can screw out any meaning from the Bhagavad Gita, because every verse can have many meanings, because Sanskrit is such a rich language. One word can have many meanings. 50-60 meanings one word carries. So यहाँ पर अगर आप परंपरा में knowledge नहीं लेंगे, then you can misunderstand this verse. So actually में क्या है? If you see the translation word to word, one, there are 6, है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 times the word Atma is being used. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times. 7 times Krishna has used the word Atma. अब अगर आप अपने से पढ़ना चाहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या समझ में नहीं आ रहा. So therefore we require a guru, a spiritual master, that too who is coming in disciplic succession and who understand कौन से आत्मा क्या मतलब है. So Prabhupada explains that Atma can mean the body, Atma can also mean the mind, Atma can also mean the intelligence, and Atma can also mean the soul. And at times Atma can also refer Paramatma or super soul also, Krishna. Same word, Atma only, but according to context, किस context में discussion हो रहा है, उसके हिसाब से meaning अलग होता है. So context अगर नहीं समझे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, और context वही समझ सकता है जो भगवान के mind को समझ रहा है, भगवान क्या बोल रहे हैं. And who can understand the mind of Krishna? One who is intimately united with Krishna, and they are pure devotees of Krishna. Only pure devotees are intimately united with Krishna. They are in Krishna, and they are, Krishna is in them. That is the position of devotees. So because they understand the mind of Krishna, so they can only tell what Krishna is trying to convey in this verse, what Krishna has intended. Krishna का intention क्या है इस श्लोक को बोलने के लिए? Because a devotee is intimately connected with Krishna, so he understands the mind of Krishna, the intent of Krishna. So only a devotee who is in parampara, disciplic succession, he only can explain the right knowledge. See here Prabhupada, therefore we require the under guidance of Prabhupada. Without Prabhupada, we can never understand Bhagavad Gita. See, Prabhupada is writing, Atma means mind. See, मन means mind होता है, यहाँ आत्मा मतलब mind है. फिर दूसरा आत्मा मतलब सोल. फर्स्ट आत्मा मतलब माइंड, दूसरा आत्मा मतलब सोल, फिर तीसरा जो आत्मा उसका मतलब सोल, फिर चौथा आत्मा उसका मतलब माइंड, फिर पांचवा आत्मा उसका मतलब सोल, फिर छठवां आत्मा माइंड, फिर सातवां आत्मा सोल. सो कौन सा आत्मा सोल को बता रहा है, कौन सा आत्मा माइंड को बता रहा है, ये केवल गुरु ही बता सकते हैं. सो नाउ यू सी, now it translation becomes very clear. One must elevate himself by his own mind, not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. So mind जो है friend है और शत्रु भी है. Controlled mind is a friend,
Now here you can see a person is there and he's trying to control the mind. He's trying to control the mind, but he's unable. So many urges are there in the mind and they are pulling us in different directions. So if mind is controlled, then it is your best friend. And if mind is not controlled, then it will be your greatest enemy. Just like here you can see in the image, worst enemy. So it is like mind is like uncontrolled mind is like a friend who is very very dangerous, fake friend. यहाँ पर आप देख सकते हैं, you can see person who is tying the thread of the thread of the shoes of another friend, but this friend from behind is stabbing him. Even though this person is trying to serve, but the friend, he is stabbing him. This is our mind. This is exactly what mind does with us. We are trying to satisfy the mind with all the ways and means possible. But what does mind do with us? Mind is killing us. Every moment mind is killing us, taking us astray. See here, mind is full of lust, anger, greed. और एक जेंटलमैन है जो कि चाह रहा है कि अच्छा लाइफ जिए, बट बिकॉज हिज माइंड इज अनकंट्रोल्ड, लस्ट, एंगर, ग्रीड विल नॉट अलाउ हिम टू remain a gentleman. Mind will dictate him to commit sinful activity. But if his mind, despite of having lust, anger, greed, if his mind is having Krishna, then such mind can be the friend of yours. See, here two images are there. एक gentleman है और उसका mind है. You and your mind, me and mind. So आपका mind जिसमें लस्ट भरा पड़ा है, it is your enemy, beating you constantly, slapping you, आपके गाल पे थप्पड़ मारे जा रहा है. But on the other hand, अगर आपके माइंड में कृष्णा है, तो आपका माइंड आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, जो आप चाहेंगे वैसा करेगा. So we all are actually imprisoned by the mind, uncontrolled, because mind is uncontrolled, no? See here it is, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षये. मन ही है जो कि मनुष्य के बंधन का कारण है. For the mind, for man, mind is the cause of bondage and mind is the cause of liberation. Mind absorbed in sense object is the cause of bondage, and mind detached from the sense object is the cause of liberation. Therefore, the mind which is always engaged in Krishna consciousness is the cause of supreme liberation. Here in this image you can see mind, because mind is Krishna conscious, so it will liberate you, otherwise it will imprison you. Here just like you see, our mind has imprisoned you very miserably and we are suffering. So very important. Same thing, conquered the mind is the best friend, who has failed to do greatest enemy. Now here we'll see the hierarchy of our body. हमारा hierarchy कैसे body का? 5 senses are there, then mind, intelligence and soul. Third chapter हम लोगों ने देखा था. अगर आप लोगों ने थर्ड चैप्टर अटेंड किया होगा तो उसमें एक श्लोक, लास्ट में श्लोक आया था, इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परसस्तु स्व. देयर आर डल मैटर्स, डेड मैटर्स, देन उसके ऊपर माइंड, सेंसेस हैं, these 5 senses. Here senses represent these 5 horses. And then senses से ऊपर क्या है? इंद्रियाणि पराणि परम मन, मन इंद्रियों से ऊपर मन है. So यहाँ पर मन क्या है? These reins, they represent mind. And मनसस्तु परा बुद्धि, और मन के ऊपर बुद्धि है. तो माइंड, ये रेंस को कौन कंट्रोल कर रहा है? ये जो चैरियटियर है, चैरियट ड्राइवर. एंड इंटेलिजेंस एंड बुद्धि तु परतस्तु स, बुद्धि के ऊपर कौन है? सो मीन्स हम, आत्मा. तो यहाँ पर देखिए चैरियटियर के पीछे जो पैसेंजर बैठा, सोल. सो दिस इज हायरार्की ऑफ द माइंड, आवर बॉडी, दिस कंप्लीट बॉडी. 5 सेंसेस, then mind, उससे ऊपर इंटेलिजेंस, उससे ऊपर स्पिरिट, सोल. Now the sequence is the correct sequence is soul. कैसे? जैसे आप कभी रथ में अगर आप बैठे हो
तो आप क्या क्या हाउ डू यू गो इन योर टू अचीव योर डेस्टिनेशन, हाउ डू यू गो अबाउट अकॉर्डिंग टू यू? अगर आपने कभी चैरियट में बैठा है तो आप पैसेंजर हैं, यू विल डिक्टेट द पैसेंजर ड्राइवर, ड्राइवर विल, because he is holding the reins, so he will use his reins in such a way that horses are moving in right direction, yes or no? And finally that those horses will take you to right destination. So देखो इसमें पैसेंजर है, उसके गाइडेंस में जो ड्राइवर काम कर रहा है, ड्राइवर के कंट्रोल में रेन्स है, रेन्स आर कंट्रोलिंग दी हॉर्सेस हु आर दी हु आर द मेन एग्जीक्यूटर्स, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दे आर दी हॉर्सेस, है ना? उसी तरीके से हमारे दिस हायरार्की बॉडी में भी this five senses are actually doing everything, no, in this material world. They are interacting with this material world, these five senses. So five senses, how to interact, what should be our disposition, where should I use my senses? These senses should be properly guided. अगर guided नहीं है तो सपोज आप चैरियट में बैठे हैं और these horses are taking you in any direction without any guidance, there is no control on the horses, then what will happen? Just like this man you see in the image, these horses are uncontrolled, these horses are taking all the horses are pulling different direction the chariot. So this chariot is going through all the upheavals, you see, mountains and all those kinds of problems this passenger is facing. And even if the driver is also bewildered, intelligence is bewildered, because the senses have become so loose. These horses are uncontrolled, taking in any direction. And जो देखो कहाँ से ये पहिया देखो आप, the wheel of the chariot you see, going through all kinds of stumbling blocks, hurdles, mountains and all. And the passenger who is sitting, he is, completely bewildered. So this happens with us also. अगर mind control नहीं है, senses अगर कंट्रोल नहीं है तो क्या होगा? और वी हैव ऑल द फाइव सेंसेस एंड अनफॉर्चुनेटली ऑल द फाइव सेंसेस आर वेरी वेरी पावरफुल. अगर आपको पता है, वी डोंट हैव मच टाइम, हमारे सेंसेस इतने स्ट्रांग हैं कि ऑल द सेंसेस हैव एबिलिटी टू, इवन वन सेंस हैव दैट मच पावर दैट इट कैन टेक अवे स्ट्रे, इट कैन मेक यू स्ट्रे, completely swayed away in this material world. In tomorrow's class we'll see how every senses are very very powerful. So if senses are controlled, sense को control करना है mind के through, means reins के through. Mind को control करेगा intelligence through transcendental knowledge, and intelligence को guide करेगा आत्मा. You आत्मा means you. So you have to take the decision and use your intelligence in taking right knowledge. Bhagavad Gita समझने में, understand करने में. So when you have this transcendental knowledge stored in intelligence, इंटेलिजेंस का बिजनेस क्या है? एनालिसिस करना बेस्ड ऑन नॉलेज व्हिच द सोल हैज गिवन टू द इंटेलिजेंस. सो इंटेलिजेंस मेमोरी से रेफर करके इट विल यूज द नॉलेज व्हिच इज स्टोर्ड इन द मेमोरी एंड गाइड द माइंड. माइंड को गाइड करेगा एंड माइंड विल कंट्रोल द सेंसेस. दिस इज हाउ हमें लाइफ को लीड करना. लेकिन अभी क्या है? उल्टा है. अभी उल्टा क्या है? हॉर्सेस अपने हिसाब से रेन्स को खींच रहे हैं. रेन्स भी जो ड्राइवर है उसको पूरा, है ना, कोई कंट्रोल में नहीं है रेन्स उनके, और ड्राइवर जो सोल है उसको सुन ही नहीं रहा है. अपने हिसाब से सब चल रही है यहाँ पर चीजें. तो हमारे लाइफ में भी ऐसे ही है. सेंसेस आर मूविंग अराउंड, engaging in sense objects according to its own whims. माइंड जैसा डिक्टेट कर रहा है, क्योंकि माइंड भी अनकंट्रोल्ड है, तो माइंड जैसा जैसा डिक्टेट कर रहा है वैसा वैसा सेंसेस कर रहे हैं. एंड वी आर लॉस्ट हियर इन दिस मटेरियल. सो वी हैव टू लर्न दिस, वी हैव टू see this correct flow, we have to go, or we have to follow. Soul should guide the intelligence, intelligence should guide the mind, and mind should control the senses. Then क्या होगा? अगर ऐसा कर लिया आपने, तो इस श्लोक में देखो आप, one who has conquered the mind, the super soul is already reached. Super soul means you have already achieved Krishna just by controlling the mind. See, so mind is so powerful. And then you have achieved tranquility. To such a man, अगर आपको mind control होगा,
happiness, distress, heat, cold, honor, dishonor, all will be same for you. No disturbance. And now how to control the mind is there is only way to neglect the dictation of the mind and chant Hare Krishna. This is the only way. Thoughts will come, desires will come, you have to avoid, neglect the dictation, neglect the desires of the mind and chant Hare Krishna. So दो चीज, एक तो neglect, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव. बिना पॉजिटिव दिए नेगेटिव चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते. अगर आप एक छोटे बच्चे को बोलो, अगर बहुत शरारती बच्चा है, माँ उसको कंट्रोल करना चाहती है, तो उसको मना करने से केवल नहीं कंट्रोल कर सकती, उसको पॉजिटिव एंगेजमेंट देना ही पड़ेगा अपने बच्चे को. अगर बच्चे को केवल मना कर रही कि मत करो, ये मत करो, चुपचाप से बैठो, तो बच्चा शरारत करेगा ही, गलत काम में इंडल्ज होगा ही, टीवी देखेगा, पबजी खेलेगा. तो क्या करना है मदर को? मदर को चाहिए कि बच्चे को एक पॉजिटिव एंगेजमेंट दे. चल तू ये नहीं, पबजी नहीं खेलेगा, तू ये कर, पढ़ाई कर. और एक बार पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट हो गया तो नेचुरली वो गलत चीजों में इंडल्ज नहीं होगा. वो माइंड, वो बच्चा स्वतः कंट्रोल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा. सो निगेटिव चीज से केवल आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते अनलेस यू गिव द पॉजिटिव थिंग. तो माइंड को केवल निग्लेक्ट नहीं करना है, उसको पॉजिटिव एंगेजमेंट भी देना है. You have to neglect the desires of the mind. Parallelly, you have to give Krishna conscious stuff. Then mind will be controlled. That's how we can see it. And this is how we can handle the duality or paradox of this material world. No? एक साइड में आप तो बहुत एडवांसमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? We are frustrated, we are confused, we are not happy. Mind is not controlled. This is a paradox of life. No? Big motivational speakers, they talk about control of mind, but they themselves are not able to control the mind. This is the paradox of life. So here you see, so mind का business है कि it will follow the dictate of the somebody. So अगर हम अगर कृष्णा के इंस्ट्रक्शन को नहीं फॉलो करेंगे तो माइंड के डिक्टेट को फॉलो करेंगे. एंड माइंड इज, हमने देखा, अगर माइंड के डिक्टेट को फॉलो किया हमने, माइंड के डिक्टेट मतलब समझ रहे हो आप? माइंड के डिक्टेट मतलब उल्टा, पूरा रिवर्स हो गया, तो घोड़े ऐसे ही भागेंगे, है ना, पहाड़ों से और ऊपर नीचे, अपहीवल्स, एंड यू विल बी लॉस्ट. सो दैट्स व्हाट हियर इट इज रिटन. Same thing. So you will be equipoised, you will be self-controlled, you see everything with equal vision. चाहे वो pebbles हो, stones और gold हो, you will not be so much greedy. And then a person is said to be still further advanced when he regards all the honest, well-wisher, friends, enemies, the envious, the pious, sinner, everyone indifferent with equal mind. When you have controlled your mind. Okay. Here one very important line Krishna uses, that we should be free from desires and feelings of possessiveness. Possessiveness से हमें free होना, free from desires and feelings of possessiveness. Now you can see in the picture here, if we have too much of possessiveness, ये मेरा मेरा मेरा, then we can go astray, we can be frustrated. So ये बहुत important instruction है, और बिना इसके हम योगा प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर सकते. ये कृष्णा ने इंस्ट्रक्शन इसलिए दिया है क्योंकि अगर कोई योगा प्रैक्टिस करना चाहता है तो बिना इसके प्रैक्टिस नहीं कर सकता. अगर आपके अंदर फीलिंग ऑफ पॉजिटिवनेस है, डिजायर्स है, तो आप योगा प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते, आप कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते. इवन पॉजिटिवनेस को मटेरियल वर्ल्ड में भी लोग कंडेम करते हैं, ओवर पॉजिटिवनेस. somebody is overly possessing his wife or whatever, anything, so there will be bitterness in the relationship. So over possessiveness is always bad. Even possessiveness in this material world, according to Bhagavad Gita, possessiveness also is bad. Nothing belongs to us, so we should not have possessive mentality. We should understand that everything belongs to Krishna, nothing belongs to us. Then only we can perform yoga. और योगा कुछ डूज एंड डोंट्स है, क्विकली आई विल फिनिश इट. यहाँ पर 11, 12, 13, 14 में पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान. 8 स्टेजेस, एवरीथिंग.
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 स्टेजेस हैं जो कि कल में मैंने बताया था। इसको कैसे प्रैक्टिस करते हैं? डूज एंड डोंट्स। डूज एंड डोंट्स मतलब यम नियम। प्रैक्टिस योगा वन शुड, देखो आप ये इमेज को मिलाते जाना। वन शुड गो टू सेक्लूडेड प्लेस एंड शुड ले कुसा ग्रास, ये देखो कुसा ग्रास में बिछाया ऑन द ग्राउंड एंड देन कवर इट विद डियर स्किन, डियर स्किन से बिछाना है, एंड अ सॉफ्ट क्लॉथ, सॉफ्ट क्लॉथ। The seat should neither be too high nor too low and should be situated in a sacred place. Sacred place like any Vrindavan or Badrinath, Kedarnath, like that. You find out. The yogi should then sit on it very firmly. इस योगी की तरह बैठना है and should practice yoga by controlling the mind. Mind control करके and the senses. ऐसा नहीं कि है ना आजकल के योगा लोग योगा करने जाते हैं, 21st को योगा डे मनाते हैं और स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं और योगा भी कर रहे हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन करके आए हैं, इडली और ऑल जंक फूड खा के आए हैं और दे आर डूइंग योगा। नो, माइंड कंट्रोल करना है एंड द सेंसेस, प्यूरिफाइंग द हार्ट एंड फिक्सिंग द माइंड ऑन वन पॉइंट। वन पॉइंट पे माइंड को फिक्स करना है और वो वन पॉइंट क्या है वो अभी नेक्स्ट वर्स में आ रहा है। इसमें देखो आप, वन शुड होल्ड वंस बॉडी, नेक एंड हेड इरेक्ट। बॉडी, हेड एंड नेक इरेक्ट होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना है। स्टेयर स्टडली एट द टिप ऑफ द नोज, अपने नाक के टिप पे आपको देखना है। आंख पूरा का पूरा क्लोज नहीं होना चाहिए और पूरा खुला भी नहीं होना चाहिए। पूरा खुला होगा तो इधर उधर देखेंगे, पूरा बंद हो गया तो सो जाएंगे, इसलिए नॉट फुली क्लोज, नॉट फुली ओपन। Thus, with an as it unagitated, subdued mind, mind should not be agitated और subdued होना चाहिए, controlled mind, डिवाइड ऑफ fear, और fear नहीं, अरे यार यहाँ पर बैठा तो हूँ एकांत में, कहीं शेर ना आ जाए, ये ना आ जाए, वो ना आ जाए, fearless, thinking that Krishna is there, he will protect, free and divide of fear, completely free from sex life. Now, a person who is indulged into sex life, he cannot practice ध्यान योगा। लेकिन आज के टाइम में देखो हर कोई योगा सेंटर में जाता है। So according to this instruction of Krishna, grahastha at least cannot practice yoga because invariably he has to indulge into intercourse, he will have sex life. So according to this dhyan yoga, according to this instruction of Krishna, yoga is not possible for grahastha. Only brahmachari who is abstaining from sex life can only perform the yoga practice. And फिर क्या करना? One should meditate upon me, means कृष्णा को meditate करना within the heart and make me the ultimate goal of life. देखो यहाँ पर क्लियर कर दिया कृष्णा ने पूरा, योगा का अल्टीमेट गोल है कृष्ण को ध्यान में रखना। ऐसे नहीं कि किसी को कैंडल लाइट मेडिटेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग अननेसेसरली कुछ भी अपने मन से क्रिएट करके योगा कराते हैं। बड़े बड़े संस्था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़ी बड़ी संस्था है ना, ज्योति पे मेडिटेट करो, कैंडल लाइट मेडिटेशन, दिस मेडिटेशन, दैट मेडिटेशन। नो मेडिटेशन, यू डोंट मेडिटेट ऑन एनीथिंग, जस्ट सी योर डिजायर्स, ऑल नॉनसेंस, नो रेफरेंस टू द स्क्रिप्चर्स। कहीं इसका डिस्क्रिप्शन नहीं आता शास्त्र में। यहाँ देखो क्लियरली कृष्ण ने बोल दिया है कि वन शुड मेडिटेट अपॉन मी विद इन द हार्ट एंड मेक मी द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। So that's how we understand that yoga कैसे करना है। योगा पहले समझो what is yoga, then only we can understand, practice and finally achieve the result. तो रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज योगा का रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, थोड़ा एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम करके थोड़ा हेल्थ सही हो जाएगा आपका, लेकिन हेल्थ सही करके आप क्या करोगे? सेंस ग्रेटिफिकेशन करोगे, फिर हेल्थ खराब हो जाएगा। सो योगा का एक पर्पज है ध्यान योगा, यहाँ ध्यान योगा बता रहे हैं कृष्ण। इसलिए 6 चैप्टर के एंड में कृष्ण, बीच में अर्जुन इसको रिजेक्ट कर देंगे, कृष्णा ये योगा मेरे से तो नहीं होगा, क्योंकि अर्जुन तो गृहस्थ है एंड इसमें आपको ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस करना है और माइंड कंट्रोल होना है। सो अर्जुन इस योगा प्रोसेस को रिजेक्ट कर देंगे। विल सी इन फॉर फ्यूचर क्लासेस। सो हियर विल स्टॉप। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। प्रभु एक क्वेश्चन था मेरा। हरे कृष्ण प्रभु। वो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे योगा में उन्होंने बोला था कि क्या क्या यूज करना है, उसमें एक मेंशन था कि स्किन ऑफ डियर। तो स्किन ऑफ डियर तो मतलब थोड़ा खराब होगा ना, लाइक कि हम लोग नॉन वेज से इतना
नहीं, अरे नॉनवेज का मतलब ये नहीं है कि अब जैसे कॉन्सेल बजाते हैं ना, वो तो जानवर का हड्डी है। कॉन्सेल तो मंदिर में रखते हैं और वो भी ऑल्टर के सामने, और ऑल्टर खोलने से पहले, भगवान का पट खोलने से पहले कॉन्सेल बजाते हैं, जो कि हड्डी है, जानवर की हड्डी है। और भगवान का जो चामर चामर आपने देखा होगा व्हाइट कलर का, वो व्हाइट कलर का जो चामर हम करते हैं वो भगवान की आरती में, वो तो एक जानवर की पूंछ है। पूंछ है, पूंछ, यॉक टेल, यॉक का टेल है वो। और कभी भी कोई पूजा करते हैं घर में तो वहां पर गाय के गोबर से लिखते हैं, वो तो स्टूल है, तो जानवर का ही तो है वो। तो वो ऐसे तो अपवित्र हो गया। नहीं, एक्चुअली शास्त्र में दिया है, इसलिए वो उसका अपवित्र कुछ नहीं होगा, वो पवित्र बनाएगा। जैसे कॉन्च से बजाने से पवित्रता, ऑस्पिशियसनेस आता है। जहां जहां तक साउंड जाता है वो एटमॉस्फेयर पूरा प्योर हो जाता है। तो अगर हम अपने माइंड से समझे तो हमें लगेगा यार ये तो कंट्राडिक्शन हो रहा है, लेकिन शास्त्र बता रहे हैं तो हम यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग यहाँ भगवद गीता में बताया भगवान ने कि डियर स्किन, ऐसा नहीं मार के ले आओ और किल करो देन यू यूज द डियर स्किन। डियर स्किन यूज करने से क्या होगा कि एटलीस्ट रेप्टाइल्स विल नॉट कम एंड डिस्टर्ब यू। by seeing the deer skin they will not come closer to you and you can nice, therefore वहां पर आपने देखा पुसा ग्रास भी बिछाते हैं, पुसा ग्रास then deer skin, जिससे कि you are safe from reptiles, scorpions, snake and all, they will not disturb you and you can nicely practice yoga। तो इसके पीछे साइंस है, अदरवाइज कृष्णा ने नहीं बोलते। अगर ऐसा नहीं होता तो कृष्णा इसको बोलते नहीं, बट इसका एक इम्पोर्टेंस है, इसका रोल है, तो इसलिए इसको पहले पुसा ग्रास बिछाओ, फिर उसके ऊपर डियर स्किन, फिर सॉफ्ट क्लॉथ, सॉफ्ट क्लॉथ पे फिर अच्छे से बैठ के अब देन योगा करो, है ना? जी समझ गए?